Hello dear students, in last lecture exercise 1.5 question number 1 is completed. Now next in question number 2, the details of a sample inquiry of 4979 waters of contingency are as follow. Total 4979 sample data, it means n is given. In table details male and female, supporters of party A and party B, male female given. After table, one water is randomly selected from this contingency. Number 1, if this water is male, find the probability that he is supporter of party A. Conditional probability is given. Party A depending on water is a male. And second question, if this water is supporter of party A, find the probability that he is male. Male depending on supporter of party A. Only for two information is useful in this question: supporter of party A and male. So supporter of party A is denoted by event A and male is denoted capital M. So write down first of all. Total N 4979 टोटल नंबर ऑफ वाटर्स. ओके, आप सभी आपके टेक्स्ट बुक में रो एंड कॉलम का टोटल कर दो. इन योर टेक्स्ट बुक रो एंड कॉलम का टोटल कर दो. सो टोटल नंबर ऑफ मेल्स फाइंड आउट एंड आफ्टर टेबल राइट डाउन 2538 36 2536 total number of male. Okay, total number of female find out 2443 total number of female. Okay, supporter of party A, male and female addition 2437 and supporters of party B 2542. check it. Okay, now write down event A is equal to selected water supporters of party A, selected water supporters of party A so new line P of A is equal to M upon N so total number of supporters of party A total 2437. check it. So 2437 upon 4979 for the P of A. Now next new line event
capital M is equal to event, capital M is equal to selected water is a male, selected water is a male. New line. So total number of male 2536. So write down P of capital M is equal to M upon N, 2536 upon 4979. Okay, conditional probability is given, so find out intersection event A intersection M. So A and M line draw in your textbook, supporter of party A and male. So both line cross in 1319, check it, 1319, row and column, draw it. So both line, okay, intersection in 1319. So write down event A intersection capital M, A intersection capital M is equal to selected water is a supporter of party A, is a supporter of party A and underline, and means intersection, and he is male, and he is a male. New line, write down P of A intersection capital M is equal to M upon N. So your favorable outcomes 1319 upon 4979. Okay. Now next, new line, write down for the question 1. Okay. Party A depending on male. It means A given that of capital M. Write down event A given that of M. A given that of M is equal to if this water is a male, then he is supporter of party A, then he is supporter party A. For new line, P of A given that of M is equal to P of A intersection M upon P of M. P of A intersection M, sorry, here A intersection M, write down 1319 upon 4979 divided by P of M 2536 upon 4979. So numerator denominator
4979 cut. The remaining values write down 1319 upon 2536. Okay. Your final answer A given that of M. यदि डेसिमल में राइट करना तो आफ्टर 0.4 डिजिट राइट डाउन. Second, male is depending on supporter of party A. It means M given that of A. Write down event M given that of A is equal to M given that of A is equal to if this water is a supporter of party A, is a supporter of party A, then he is male, write down new line. P of A given that of A is equal to P of M given that of A is equal to P of A intersection M upon P of A. Putting values A intersection M 1319 upon 4979 divide by P of A 2437 upon 4979. Okay, numerator denominator 4979 cut. So rest of values write down 1319 upon 2437. यो आपका फाइनल आंसर P of M given that of A is equal to 1319 upon 2437. Okay, you are completed for the question number 2. Now next, exercise 1, section A. Okay, first MCQ. Which event is given by a special subset phi of the sample space U? Okay, special subset phi. Well, answer certain event. Second, complementary event of phi. Union of event U and phi. And number 4, impossible event. यदि आपने 11 डेफिनेशन लर्न की हो तो उसमें थर्ड नंबर की आते हैं. इम्पॉसिबल इवेंट फाई मीन्स इम्पॉसिबल इवेंट एंड यू मीन्स सर्टेन इवेंट. सेकेंड डेफिनेशन. ओके, आंसर इज डी, इम्पॉसिबल इवेंट. स्पेशल सबसेट फाई मीन्स इम्पॉसिबल एंड स्पेशल सबसेट यू मीन्स सर्टेन इवेंट. सेकेंड, what is the value of P of A intersection A dash? A dash means complementary event of A. For event A and A dash, okay, value. Answer A intersection A dash. Wrong. Probability 0 to 1 between always.
सपोज u is equal to 0 1 2 3 4 5, a is equal to 0 2 4, so a dash means remaining rest of value p of a 1 3 5, so p of a intersection a dash value 0. Option B, intersection means common, same value, same member, same set. Third, which of the following option is true for any event of a sample space? कोई भी इवेंट के लिए ये चारों में से कौन सी वैल्यू ट्रू है? तो फर्स्ट, p of a less than 0, not possible, negative. Second, 0 less than or equal to p of a greater than or equal to 1, not possible. Third, 0 less than or equal to p of a less than or equal to 1, yes it is possible. कोई भी इवेंट है उसका आंसर 0 to 1 between both the interval, both limits are involved, 0 भी आंसर आ सकता है, 1 भी आ सकता है, दोनों के बीच का कोई भी आंसर, यानी कि 0 to 1 between 0 less than or equal to p of a less than or equal to 1, and last p of a greater than 1 is not possible. Option C is the correct answer. Number 4, which of the following option is not true? Underline not true. For any two events a and b in a sample space U where a subset b, a के all members including in b. क्वेश्चन इस तरह का है, ऐसा समझो आप, ये क्वेश्चन है 0 1 2 3 4 5, event A 1 3 and set B 1 3 5, A all members including in B, A subset B, इस तरह का क्वेश्चन है, ऐसा बोला है आपको. चेक इट. फर्स्ट ऑप्शन, P of A intersection B is equal to P of B. A intersection B, दोनों का इंटरसेक्शन निकालो तो क्या आएगा आंसर? 1 and 3, 1 1 3 3, so P of A intersection B is equal to 1 3, and 1 3 किसके मेंबर हैं? So P of A intersection B is equal to P of A प्रूव होना चाहिए. यहाँ पे तो क्या लिखा है? B. आपको क्या फाइंड करना है? नॉट ट्रू, तो फर्स्ट ही ऑप्शन होगा, आंसर है. सेकेंड ऑप्शन, चेक इट. P of A intersection B is equal to P of A, prove that. Third, P of A union B greater than P of A. A union B, दोनों का all the members 1 3 5, A union B, तो क्या बोले? P of A से ज़्यादा है, हो गया P of A यूनियन बी ग्रेटर देन ऑल इक्वल टू पी ऑफ ए, क्योंकि पी ऑफ ए में ओनली फॉर 1 and 3 2 मेंबर्स इन्वॉल्व है, उससे ज़्यादा हो गए. यस, पी ऑफ ए जितने हो गए या तो उससे ज़्यादा, तो करेक्ट है आंसर. 4, पी ऑफ बी डिफरेंट ए, डिफरेंट इवेंट इज इक्वल टू पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए. यस, करेक्ट. ये इवेंट बी हैपन्स, इवेंट ए डज नॉट हैपन्स, यानी कि इवेंट ए ऑकरेंस, इवेंट बी डज नॉट ऑकरेंस. क्लियर? यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नॉट ट्रू, जो सही नहीं है वही आपको फाइंड करना था. नेक्स्ट, नंबर 5. What is the other name of classical definition of probability? क्या था नेम? स्टैटिस्टिकल, क्योंकि जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो तो आपके सिलेबस में ही नहीं, मैंने कैंसिल करवाई. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्री इवेंट हेड एंड टेल ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ बैलेंस कॉइन इज नॉट ट्रू? अंडरलाइन नॉट ट्रू, जो सही नहीं है वही आपको फाइंड करना है. ऑप्शन ए, P of t 0.5, बोलो ट्रू और फॉल्स.
P of t इज इक्वल टू 0.5. सही है ना. कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1, कोई भी कॉइन टॉस करेंगे उसके 2 ही आउटकम्स आएंगे, या तो हेड या तो टेल. बोथ प्रोबेबिलिटी आर इक्वी प्रोबेबल इवेंट. हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 0.5, टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी 0.5, 1/2. सेकेंड, P of H प्लस P of T इज इक्वल टू 1. बोलो सही है. ओके. हेड या टेल दोनों का एडिशन करेंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 ही होगी. सेकेंड ऑप्शन भी सर करेक्ट. थर्ड, P of H इंटरसेक्शन T इज इक्वल टू 0.5. बोलो ट्रू का फॉल्स. फॉल्स है ना, क्योंकि इंटरसेक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है. जब हेड आएगा कॉइन पे तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा. इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इज अ 5 नल सेट. तो यहाँ पे तो 0.5, यानी कि आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. एंड लास्ट डी, P of H यानी कि हेड इज 0.5 इज ऑल्सो ट्रू. नेक्स्ट, which random experiment from the following random experiment has an infinite sample space, underline infinite sample space. यदि आपने लेक्चर अटेंड किया हो तो आपको पता होगा कि मैंने एग्जांपल दिया था, इनफाइनाइट एग्जांपल. ओके, सैम्पल स्पेस का वही है. देखो, थ्रोइंग 2 डाइज. बोलो 2 डाइज तो टोटल आउटकम्स 36, ऑल आर काउंटेबल. सेकेंड, सिलेक्टेड 2 एम्प्लॉयज फ्रॉम एन ऑफिस. सिलेक्टेड 2 एम्प्लॉयज, वो भी क्या हुआ, फाइनाइट. थर्ड, टू मेजर द लाइफ ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, इनफाइनाइट, क्योंकि उसका कितना लाइफ है वो हम पता नहीं लगा सकते, यानी इनफाइनाइट. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. एंड डी, सिलेक्ट अ कार्ड फ्रॉम 52 कार्ड्स, तो वो भी क्या होगा, फाइनाइट सैंपल का. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, इफ ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यू. अभी मैंने राइट किया था जो यहाँ पे ए एंड ए डैश, उसका एडिशन करेंगे तो ऑलवेज आंसर क्या होगा, सर्टेन इवेंट यू. देन व्हाट टाइप ऑफ इवेंट आर ए एंड ए डैश. ए एंड ए डैश किस तरह की इवेंट है, तो फर्स्ट इंडिपेंडेंट इवेंट. बोला इंडिपेंडेंट है नहीं, क्योंकि ए नहीं होगी तभी ए डैश बनेगा, ए डैश नहीं होगा तभी इंडिपेंडेंट नॉट पॉसिबल. ओके, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. बोलो सेकेंड ऑप्शन कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, ए एंड ए डैश. ए डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो ए एंड ए डैश क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. सी, सर्टेन इवेंट, तो सर्टेन इवेंट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि यू दिया हुआ ही है, वो तो ऑलवेज सर्टेन ही होगा. एंड लास्ट इम्पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल तो पॉसिबल ही नहीं है ऑप्शन, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ए एंड ए डैश कौन सी इवेंट होगी, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगी, तभी यूनियन प्रूव होगा सर्टेन इवेंट. आप यू देख के सर्टेन इवेंट आंसर मत राइट करना यहाँ पे. नेक्स्ट, P of A given that of B is equal to P of A and P of B given that of A is equal to P of B, then what type of event are A and B? बोलो. फर्स्ट इंडिपेंडेंट इवेंट, second complementary event, third certain event and fourth impossible event. डेफिनेशन लर्न की है इंडिपेंडेंट इवेंट की. इवेंट बी हैपन्स और डज नॉट हैपन्स, ऐसा मैंने फॉर्मूला में भी राइट करवाया है, चेक कर लेना. एंड इवेंट बी ए हैपन्स और डज नॉट हैपन्स, ऑलवेज आंसर पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी प्रूव होगा. कब, जब इवेंट बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, टू इवेंट्स ए एंड बी ऑफ अ सैंपल स्पेस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. अंडरलाइन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स ए इंटरसेक्शन बी नॉट, यानी कि 5 null set. A intersection B is 5. Which of the following will be equal to P of B different A? चलो B different A formula P of B minus P of A intersection B. Event B happens, event A does not happen. So P of B minus P of A intersection B, event B happens, event A does not happen. So P of B minus P of A intersection B, event B happens, event A does not happen. So P of B minus P of A intersection B, event B happens, event A does not happen. So P of B minus P of A intersection B, event B happens, event A does not happen. So P of B minus P of A intersection B, event B happens, event A does not happen. So P of B minus P of A intersection B, event B happens, event A does not happen. So P of B minus P of A intersection B, event B happens, event A does not happen. So P of B minus P of A intersection B, event B happens, event A does not happen. So P of B minus P of A intersection B, event B happens, event A does not happen. So P of B minus P of A intersection B, event B happens, event A does not happen. So P of B minus P of A intersection B, event B happens, event A does not happen. So P of B minus P of A intersection B, event B happens, event A
Event A and B are mutually exclusive event. Mutually exclusive, it means phi, 0 value. Answer is, check करो ऑप्शन में. So option B is the correct answer, P of B. Next, what is the total number of sample points in a sample space formed by throwing 6 face balanced dice simultaneously? चलो 6 balanced dice simultaneously. Okay, 3 आंसर. डाइस पे कितने नंबर रहते हैं? 1 to 6. कितने टाइम टॉस करने के बाद किए, थ्रो करने की? 3 टाइम्स. तो 6 क्यूब. ओके, नहीं तो आंसर अनदर दिया होता तो 216. 6 का क्यूब 216. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नंबर 12. If one number is randomly selected between 1 and 20, one number is randomly selected between 1 and 20, what is the probability that the number is a multiple of 5? चलो 5 के मल्टीपल में उसकी probability क्या होगी, मेरे को बोलो. Number is multiple of 5. One number is randomly selected between 1 and 20, तो 5 के मल्टीप्लिकेशन में क्या आंसर आएगा? तो n टोटल 18. किस तरह से? 1/5. किस तरह से आया आंसर? 5, 10, 4/20, 1/5. Okay, चलो 1 आंसर 1/5. Okay, now next, another, next. और किसी को कोई आंसर? Yes, between 1 and 20, 1 and 20 between total 18 ही डिजिट आएंगे. 1 and 20, ऐसा नहीं बोला कि 1 to 20 between 1 and 20. नहीं, 1 and 20 both limits are not countable. So between value 2, 3 to 19. यानी कि टोटल n is equal to 18 डिजिट. एंड 5 के मल्टीप्लिकेशन में 5, 10, 15, 20 is not involved. Only for 3 value. तो P of A m/n 3 upon आंसर 1/6. ध्यान रखता, यहाँ पे 1 to 20 राइट कर दिया होता तो 1/5. जो वर्ड्स का डिफरेंस है वो यही है. तो योर करेक्ट आंसर बी 1/6. नेक्स्ट, if event A and B are independent, underline independent event, which of the following option is true? चलो इंडिपेंडेंट इवेंट, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्या रूल्स बोला था? ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना हो तो इंटरसेक्शन में फर्स्ट ऑप्शन ए इंटरसेक्शन बी मीन्स पी ऑफ ए इंटू P of B. Event A happens, event B does not happen. So answer P of A into P of B dash. Next, event A does not happen, event B happens. P of A dash into P of B. Both the event are not happen. A formula है law of मल्टीप्लिकेशन फॉर द इंडिपेंडेंट इवेंट. टोटल 4 फार्मूला. तो आपको यहाँ पे क्या पूछा है? ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, तो फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू. करेक्ट ऑप्शन आपको फाइंड करना है. ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी. फाइंड आउट. देखो कौन सा ऑप्शन है इंटरसेक्शन बी मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी. नाउ नेक्स्ट,
What is the probability of having 5 Thursday in a month of February in a year which is not a leap year? Not a leap year. Total number of days in month of February? 28. Okay, so answer 0. 28. 7 days into 4 weeks. 7 4s are 28. Not additional days. एक भी additional days नहीं बचा. The answer is 0. कभी 5 Thursday आएगा ही नहीं. Option A is the correct answer. Next, if P of A is equal to 0.4 and P of B dash is equal to 0.3 for two independent event, underline independent event A and B of a sample space, then state the value of A intersection B. चलो A intersection B की वैल्यू बोलो. Find out. रफ पेज में वर्क करो, आंसर बोलो. A इंटरसेक्शन B की वैल्यू 0.28. Yes, first of all find out event B. B dash given है. So P of B is equal to 1 minus P of B dash. 1 minus 0.3. So probability of event B is 0.7. इंडिपेंडेंट इवेंट, अभी मैंने बोला था इंडिपेंडेंट इवेंट मीन्स फॉर्मूला A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P of A into P of B. Value of P of A is given 0.4 and P of B find out 0.7. Answer 0.28. A intersection B. Option C is the correct answer. Next, for two events A and B of a sample space, state the event A intersection B union A intersection B dash. चलो आंसर बोलो. ऑप्शन A B C D. A intersection B dash means A intersection B dash. It means उसका मतलब क्या होगा? Event A happens, event B does not happen. It means different event दी हुई है. A intersection B dash means. तो देखो अब किस तरह सब आंसर फाइंड करेंगे. A intersection B union A intersection B dash. Here first of all write down A intersection B. चलो union means addition, intersection means multiplication. ऐसा मैंने राइट करवाया था, याद हो तो आपको. Union means addition. A intersection B dash, event A happens, event B does not happen. तो उसका आंसर क्या होगा? Event A happens minus event A B does not happen. So A intersection B. यहाँ पे probability words नहीं यानी P नहीं राइट करेंगे हम. Bracket remove. So A union B plus A minus A intersection B. Answer is A. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पे पी ऑफ वर्ड्स नहीं दिया है प्रोबेबिलिटी, इसलिए हमने कभी पे भी पी राइट नहीं किया. ओनली फॉर इवेंट ये. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. एंड लास्ट 17.
अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल डेफिनेशन, वो आपके कोर्स में नहीं है, कैंसल, उसका आंसर 1/n आएगा। कोई भी प्रोबेबिलिटी है उसका आंसर 1 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, सिलेबस में नहीं है 17। ओके, नाउ नेक्स्ट सेक्शन बी, गिव टू एग्जांपल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में हमने बताया वो सभी एग्जांपल किसके थे, रैंडम एक्सपेरिमेंट। टॉस द कॉइन, थ्रो द डाइस, ओके, वो सभी एग्जांपल किसके, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ड्रॉ द वेन डायग्राम फॉर ए डिफरेंट बी ए एंड डिफरेंस इवेंट ऑफ ए एंड बी, वो भी हमने वेन डायग्राम विथ एग्जांपल ड्रॉ किया हुआ है। नेक्स्ट, डिफाइन एन इवेंट, राइट द सैम्पल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग वन बैलेंस डाइज एंड अ कॉइन सिमिलटेनियसली, वो भी आउटकम्स राइट किए, 12 आउटकम्स। नेक्स्ट, डिफाइन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वो भी आपके कोर्स में। स्टेट द फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट आउट ऑफ 3 इवेंट्स ए, बी एंड सी, इट मीन्स लॉ ऑफ एडिशन फॉर द 3 इवेंट्स, फॉर्मूला राइट डाउन। नेक्स्ट, डिफाइन इंडिपेंडेंट इवेंट्स, वो भी है आपके कोर्स में। राइट द लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी इन अ सैम्पल स्पेस, जो अभी मैंने राइट किया था 4, ए इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी डैश एंड ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, वो ऑल 4 फॉर्मूला राइट करनी है। इंटरप्रेट P of A given that of B and P of B given that of conditional probability, A given that of B and B given that of A. Number 10, when can we say that 3 events A, B and C in a sample space are exhaustive? Okay, exhaustive event है तो आंसर क्या राइट करेंगे आप, A, B and C का सैम्पल स्पेस। एग्जॉस्टिव मीन्स, बोलो, एग्जॉस्टिव इवेंट मीन्स जो 11 डेफिनेशन हमने स्टडी की उसमें 9th एग्जॉस्टिव इवेंट। ओके, सो A union B is equal to, you prove that mutually exclusive means null set and exhaustive event means union, you prove that. So here P of A union B union C is equal to U is equal to 1. Now next, arrange P of A union B, P of A intersection B, 0, P of A plus P of B in ascending order. Okay, चलो ascending order में बोलो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा, 0। ओके, चलो डन, 0। नेक्स्ट, P of A, नेक्स्ट A, wrong। नेक्स्ट, इंटरसेक्शन, नेक्स्ट यूनियन, एंड लास्ट P of A प्लस P of B। यहाँ पे 2 इवेंट की प्लेस पे कोई एक ही इवेंट हो सकती है, P of A और P of B, ध्यान रखना। फिर इंटरसेक्शन, नेक्स्ट यूनियन एंड लास्ट एडिशन। और उसके बाद क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी 0 to 1, यदि लास्ट में हो तो 1 लास्ट में आएगा, 0 to 1 बिटवीन प्रोबेबिलिटी। अब ये अरेंजमेंट सही है कि रॉन्ग है, वो आप कोई भी एग्जांपल लेके प्रूव कर सकते हो। जो मैंने अभी राइट किया था, U = 1 to 5, इवेंट A ले लो, कोई इवेंट B ले लो, इवन एंड ऑड नंबर, अरे सभी प्रूव करो, फिर आपको पता चल जाएगा कि असेंडिंग ऑर्डर में राइट है। डिसेंडिंग बोलेंगे तो इन्वर्स ऑर्डर में आएगा, ध्यान रखना सभी। ओके, रिवर्स ऑर्डर में राइट करना पड़ेगा। नहीं, क्वेश्चन पेपर में प्रॉपरली लर्न करना, असेंडिंग पूछा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है। नेक्स्ट, डिफाइन ऑल डेफिनेशन आई गई है। 13, चलो क्वेश्चन नंबर 13 फॉर द सेक्शन बी।
For two events A and B in a sample space, A intersection B is equal to phi and A union B is equal to U. State the values of P of A intersection B and P of A union B. चलो दोनों की वैल्यू क्या होगी? A intersection B is equal to phi and A union B is equal to U. So P of A intersection B and P of A union B value 0 and 1. Intersection phi means 0 and union event में union but probability words आएगा तब आंसर क्या हो जाएगा 1. So write down answer for two events A and B in a sample space, A and B in a sample space, comma, A intersection B is equal to phi, A intersection B is equal to phi and A union B is equal to U, A union B is equal to U, then the value of P of A intersection B is equal to 0 and P of A union B is equal to 1. Next question number 14. If two events A and B in a sample space are independent, underline independent, then state the formula for P of A union B. Okay, chalo, independent event. So formula for P of A union B is equal to लॉ ऑफ एडिशन की फॉर्मूला क्या होगी टू इवेंट्स की? लॉ ऑफ एडिशन, यस, पी ऑफ ओके, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी. बट हियर बोथ द इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट. सो इंडिपेंडेंट में इंटरसेक्शन, इंडिपेंडेंट इवेंट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू P of A into P of B. So आंसर क्या होगा आपका? P of A union B is equal to P of A plus P of B minus in bracket P of A into P of B. इस तरह से आप राइट करेंगे. फॉर्मूला फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट A and B, P of A union B is equal to P of A plus P of B minus in big bracket P of A into P of B. Next, question number 15. If A is equal to in curly bracket x where 0 less than x less than 1. Okay, value of A क्या है? 0 to 1 between 0 and 1, both value not involved. And P of B is equal to x where 1 by 4 less than or equal to x less than or equal to 3. और B की वैल्यू क्या है? 1 by 4 to 3 between all value and both the limits are countable. Then find the A intersection B. Event A 0 less than x less than 1. Event B 1 by 4 less than or equal to x less than or equal to 3. First event A write down.
0 to 1. Okay, 0 1. Both the limits are not countable, यानी कि cross not involved. Event B 1/4 to 3. Both the limits countable. Intersection means common member in both the set. ये हुआ हमारा इंटरसेक्शन. सो आंसर बोलो, इंटरसेक्शन का आंसर इंटरसेक्शन मीन्स आंसर बोलो. मैंने डायग्राम भी ड्रॉ किया है. 1 and 1/4 wrong. Event A 1/4 including or not including? Including. Okay. Event B 1/4 including or not including? क्यों including तो event B में less than or equal to 1/4 is including. Event B also. Okay. Event A 1 is including or not including? Not including, cross. Event B 1 is including or not including? Including. तो आंसर किस तरह से राइट करेंगे? P of A intersection B is equal to in curly bracket 0 less than x less than 1 between sign intersection 1/4 less than or equal to x less than or equal to 3. Answer 1/4 including in both the events, so less than or equal to x. But 1 is not including for the event A and only for less than 1. So your answer in big bracket 1/4 comma 1 in small bracket. 1 and 1/4 नहीं, 1/4 to 1 in interval form. Interval form. Okay, write down. डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपको प्रॉपरली पता चलेगा कि आंसर आपको क्या राइट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. फॉर 2 independent event, underline independent event A and B, P of A is given 0.5 and P of B 0.7. Then find the P of A dash intersection B dash. Okay, चलो A dash intersection B dash आंसर किस तरह से फाइंड करोगे आप? बोलो आंसर. A dash intersection B dash. P of A is equal to 0.5. So complementary event of A dash, formula 1 minus P of A. So 1 minus 0.5, value of P of A dash also 0.5. P of B is given 0.7. P of B dash means, so P of B dash is equal to 1 minus P of B. 1 minus value of P of B 0.7. P of B dash is equal to 0.3. Here both the events are independent. So answer P of A dash intersection B dash is equal to P of A dash
into P of B dash. P of A dash, answer is 0.5 and P of B dash 0.3. 0.5 into 0.3. A dash intersection B dash 0.15. इस तरह से आप फाइंड करेंगे P of A dash intersection B dash. Next, if P of A is equal to 0.8, P of A is given 0.8, and P of A intersection B is 0.25. Find the P of A different B. A different B formula P of A minus P of A intersection B, different event. So write down P of A different B is equal to P of A minus P of A intersection B. 0.8 minus 0.25, 0.55, check it. Event A different B, event A happens, event B does not happen. Probability is 0.55. Next, question number 18. P of A is equal to 0.3 and P of A intersection B is equal to 0.03, then find the P of B different A event. Okay, देखो question 18. P of A 0.3 and P of A intersection B 0.03. So write the formula P of B given that of A is equal to P of A intersection B upon P of A, 0.03 upon 0.3. बोलो आंसर. (0.03 upon 0.3) answer is 0.1. Probability for B given that of A is 0.1.